वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूम राइटिंग, जो कि आपके टर्म 2 क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का एक पार्ट है, एक टॉपिक है राइटिंग स्किल का। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूम राइटिंग को किस तरीके से लिखें जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलें। So first of all, before beginning, it becomes really important to understand the difference between these three terms because simultaneously you must have heard about all of them. CV, resume और biodata कि इन सभी में difference क्या है. Okay, this curriculum vitae is in short called CV और फिर ये resume और फिर biodata. Let us see what is the difference between these three. First of all, we have CV. CV contains details which are more relating to education and life. Life also is included here. It is more in-depth details than a resume. Resume जो है उसे हम in a way कह सकते हैं that it is a short form of CV. And CV is in-depth detail. It may be 2-3 pages or even longer depending ऑन वंस रिक्वायरमेंट। जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का और प्रोफेशन का, उसकी सीवी उतनी ही ज़्यादा लंबी हो सकती है। इट मीन्स इट कैन बी more than 2-3 pages as well. It covers all details in a chronological order. सभी डिटेल्स लाइक कि आपके प्रोफेशनल लाइफ के सभी डिटेल्स इंक्लूडेड होती हैं इसमें, और डिटेल्स भी ये क्या होती हैं, इन डेप्थ, जो कि यहाँ पे बताया इन डेप्थ होती हैं। इट कवर्स जनरल टैलेंट रादर दैन स्पेसिफिक स्किल्स। जैसे कि रिज्यूमे में हम जॉब स्पेसिफिक स्किल्स लिखते हैं, बट सीवी में हम जनरल टैलेंट लिख देते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी स्कूल में मैथ्स का टीचर बनना है तो आपको सिंगिंग बहुत अच्छी आती है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो अगर आप रिज्यूमे लिख रहे हैं तो आप मैथ से रिलेटेड चीज़ें उसमें इंक्लूड करेंगे, बट अगर आप सीवी लिख रहे हैं तो एज सीवी इज रिटन इन डेप्थ, तो उसमें आप अपनी सिंगिंग क्वालिटी भी इंक्लूड कर सकते हैं। Next we have resume. Resume is a word originated from the French word resume. It means summary. Education, skills and employment summarized together is called a resume. आपका educational qualification, आपके specific skills that is needed for that particular job and employment status like कितना job experience है, ये सभी मिला के जो हम बनाते हैं summary, that is called resume. A resume is an outline of what you are and does not list down all details of a profile. सारी details आपकी इसमें included नहीं होती हैं, बस वही details होती हैं जो कि उस particular job के लिए required होती हैं, okay? But showcases specific skills customized to the target job. अब नंबर 3 हमारे पास जो है वो है बायोडेटा। बायोडेटा इज नथिंग बट एन ओल्ड फैशन टर्मिनोलॉजी फॉर रिज्यूमे और सीवी। ये ओल्ड फैशन टर्म है बायोडेटा, रिज्यूमे और सीवी के लिए भी इट्स नथिंग न्यू। बायोडेटा इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर बायोग्राफिकल डेटा एंड इज एन आर्केइक टर्मिनोलॉजी फॉर रिज्यूमे और सीवी। इन अ बायोडेटा द फोकस इज ऑन पर्सनल पर्टिकुलर्स like date of birth, gender, religion, race, nationality, residence, marital status, etc., other than educational thing and other job related experiences. बायोडेटा जो टर्म है वो जनरली हम यूज करते हैं मैट्रिमोनी के केस में। ओके, मैट्रिमोनी मीन्स शादी के लिए अगर लड़के लड़की का बायोडेटा हम शेयर करते हैं, हम वहाँ पे नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम रिज्यूम शेयर कर रहे हैं। ओके, वहाँ हम बायोडेटा शेयर करते हैं। At times, biodata also includes applications made in specific formats as required by the company. The term biodata is mostly used in India. ये जो term है biodata, ये इंडिया में ज़्यादातर यूज़ होता है। resume भी इंडिया में यूज़ होता है, बट रेज्यूमे जनरली आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा यूज़ होता है, इंडिया में बायोडेटा यूज़ होता है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सीवी, बायोडेटा या फिर रेज्यूमे तीनों ही नाम से आ सकता है। So word limit for these answers will be 100 to 120 for this term and it will be of 5 marks. Mark distribution is format will be of 1 mark, content will be of 2 marks and expression also 2 marks. If you are writing the whole format correctly, you are going to get the whole 1 mark, and if you have included all the content then 2 marks, and if you have written it correctly, grammatically correctly, and you have made use of good words also, that also depends, then 2 marks.
Now we come to resume और biodata. It is written to apply for jobs and it consists of two parts. ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको दो पार्ट्स में आंसर करना होगा. फर्स्ट पार्ट विल हैव जॉब एप्लीकेशन. ओके, फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा एंड सेकेंड पार्ट विल बी resume. Okay, resume. So in case you are missing any of these two parts, अगर for example आपने biodata नहीं लिखा या resume नहीं लिखा तो आपको उस पार्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे. Fine. So in order to write this answer completely, you will have to write both the parts. कवरिंग लेटर फॉर्मेट. कवरिंग लेटर यहाँ पे यूज किया गया है जॉब एप्लीकेशन वाले पार्ट के लिए. इज सिमिलर टू द फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. And after signing, mention the heading enclosures. This will understand better with the help of a few examples. अब जब enclosures की बात आई है कि signing off के बाद enclosures mention करना है, तो हम generally क्या enclose करते हैं resume के साथ, job application के साथ basically हम अटैच करते हैं resume, हम अटैच करते हैं copies of certificates and we also attach sometimes passport size photographs or sometimes we attach सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप्स ऑल्सो. अगर जो एडवर्टीजमेंट आया है उसमें मेंशन्ड है कि आपको ये भेजना है तो वो भी हम अटैच करके भेजते हैं. अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी लर्निंग द फॉर्मेट ऑफ कवर लेटर और जॉब एप्लीकेशन. इनका हम फॉर्मेट देखते हैं और पहले ही बता दिया आपको कि ये जो फॉर्मेट है ये एग्जैक्टली होता है फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट. तो हम यहाँ पे क्विकली इसे रिवाइज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स सेंडर्स एड्रेस हियर एंड कीप इन माइंड कि सेंडर का जो एड्रेस है आप एक या दो लाइन यूज करें उसके लिए. डू नॉट राइट इन अ सिंगल लाइन. ओके, मेक यूज ऑफ 1-2 लाइन, समटाइम्स 3 लाइन्स ऑल्सो अलाउड. देन वी राइट द डेट पार्ट. डेट का जो फॉर्मेट होता है आप एक डेट याद कर लीजिए, वही आप सभी फॉर्मल चीज़ों में लिखिए. वेदर यू आर राइटिंग फॉर्मल लेटर और नोटिस और एनीथिंग, यू हैव टू राइट दिस वे ओनली. जैसे कि अगर मैं आज की डेट कोट करूँ तो आई विल राइट 12, देन आई विल राइट मार्च, फुल स्पेलिंग हियर, देन आई विल राइट 2022. Okay, this way you will be writing date. This is the type of date expected from you while writing formal letters and even job application as well. After that comes receiver's address. अब बहुत से students का ये question होता है that do we need to leave lines here? See, there is no such rule ऑफ लीविंग लाइन्स बिटवीन दीज टू थिंग्स. ऐसा कोई रूल नहीं है. अगर आप लाइन्स नहीं छोड़ते हैं तो उसके मार्क्स नहीं कटेंगे. बट अगर आप लाइन्स छोड़ते हैं यहाँ पे तो फायदा क्या होता है कि आपका जो लेटर है वो क्लियर नजर आता है कि कहाँ पे आपने सेंडर एड्रेस लिखा है, कहाँ पे आपने डेट लिखी है और कहाँ पे आपने रिसीवर्स एड्रेस मेंशन किया है. Now we come after receiver's address, subject part. One thing is left here. In receiver's address, we have to write the designation of the person also. जिसको कि आप अपना लेटर एड्रेस कर रहे हैं उसका आप डेजिग्नेशन यानी कि उसकी जो पोस्ट है, पोर्टफोलियो जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. सब्जेक्ट, अंडरलाइन द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट लिखने के बाद ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दे. अब अंडरलाइन किस लिए करते हैं? जिससे हमारा सब्जेक्ट हमें दूर से ही साफ साफ नजर आ जाए और उस पर नजर पड़ जाए रीडर की कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. देन कम्स सैल्यूटेशन पार्ट. तो सैल्यूटेशन में यहाँ आप देख सकते हैं डियर सर लिखा हुआ है. So there are two ways of writing salutation. First one is you write dear sir as it is. Dear का D capital होगा and sir S will be capital. And another way is only writing sir और ma'am. Okay, तो ये वाला भी आप लिख सकते हैं. A few people think that in formal letters writing dear is wrong. So to be on the safer side, you should go with this one. Okay, अगर आपको लगता है कि आप dear नहीं लिख सकते फॉर्मल लेटर में तो आप सर या मैम वाले सैल्यूटेशन को ही यूज करिए. बट इफ यू आर मेंशनिंग डियर सर और डियर मैम देन ऑल्सो इट्स नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट. ये भी गलत नहीं है. आफ्टर मेंशनिंग दिस यू विल बिगिन बॉडी ऑफ द लेटर फ्रॉम हियर. तो ये पूरा पार्ट आपका बॉडी ऑफ द लेटर हो जाएगा. उसके बाद आप यहाँ सब्सक्रिप्शन डालेंगे योर्स सिंसेरली. Keep in mind this yours is not having apostrophe. YOURS. No apostrophe here. Please do not commit this mistake.
Another thing is that this sincerely S which was here capital, you are supposed to write here in small. ये आपको capitals में नहीं लिखना है. Sincerely you will write S with small. Then you will leave space after this for signature. Then you will mention your name in block letters जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है. नाउ वी कम टू द बॉडी ऑफ द कवरिंग लेटर. अब जैसे हमने कवरिंग लेटर का फॉर्मेट तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि हम कवरिंग लेटर की जो बॉडी है उसके पार्ट्स हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं और उनमें हम क्या क्या लिख सकते हैं. जनरली यू आर एडवाइज दैट यू हैव टू मेक यूज ऑफ पैराग्राफ्स इन बॉडी ऑफ द फॉर्मल लेटर्स. तो यहाँ भी आप पैराग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट पैराग्राफ यू कैन डेडिकेट टू राइट द मीडिया सोर्स वेयर यू सॉ दिस एडवर्टीजमेंट. आप उसका बता सकते हैं. लाइक अगर आपको वेबसाइट पे मिला तो आप वो वेबसाइट मेंशन करेंगे. इफ यू गॉट इट इन एनी न्यूज़ पेपर देन यू विल बी मेंशनिंग दैट न्यूज़ पेपर देयर. And you also can mention the advertisement number if it is given in the question paper, and even date of publish of that news, that advertisement if it is mentioned in the question paper. Second paragraph you can dedicate to write your qualification और अपने जो experiences हैं आपके, आप उनको short में like 2-3 lines में आप mention कर सकते हैं. एंड यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्रेस योर सूटेबिलिटी कि मैं सूटेबल हूँ इस जॉब के लिए क्योंकि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं गुड लुकिंग हूँ, स्मार्ट हूँ. ये आप कर लिख सकते हैं. बट कीप इन माइंड, डू नॉट एग्जैजरेट और बोस्ट. आपको बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में नहीं बताना है. यू डू नॉट हैव टू एग्जैजरेट योरसेल्फ व्हाइल राइटिंग अ जॉब एप्लीकेशन. नाउ कम्स पैराग्राफ 3. मेंशन द एनक्लोजर्स अटैच्ड. आप पैराग्राफ 3 में एनक्लोजर्स अटैच जो कर रहे हैं वो मेंशन कर सकते हैं. इफ यू आर अटैचिंग फोटोग्राफ, यू आर अटैचिंग रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, व्हाटएवर यू आर अटैचिंग देयर, everything can be mentioned in paragraph number 3. And then you have to end the body of the letter with a promising note like looking forward to your positive response. Something like this you are supposed to add there. One more thing, after signing off, जो कि मैंने आपको previously बताया, you will have to mention enclosures. But if you are mentioning all your enclosures in the paragraph number 3 itself, then there is no need of mentioning them separately. Now we'll discuss the format of biodata or resume. Why I am mentioning these two terms simultaneously? Because आपके एग्जाम में, इंग्लिश एग्जाम में, या तो बायोडेटा नाम से आ सकता है या रेज्यूमे, और sometimes it can be written as CV also. Then also you will be writing similar answers, same format you will be using. So here we are. When it comes to the format of resume or biodata, you need to include these details like your name, your father's name, date of birth, and sometimes mother's name also is included, address, phone number, email ID, hobbies, languages known, educational qualification, experience, reference, सिग्नेचर. अब इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग बुक्स में आपको नहीं नजर आएंगी. लाइक समवेयर यू विल नॉट फाइंड दिस थिंग, सो इट्स फाइन, दैट फॉर्मेट ऑल्सो इज करेक्ट. And even somewhere you will not find the language known, that also is correct. Okay, otherwise in a broader way, these details which are mentioned here, these all are really very important. They are mandatory to be included in a biodata. And when it comes to qualifications, educational qualifications, you can write them in tabular form this way also by making table. Like first you can write name of the examination, then name of board or university, then name of institution, then year of passing, subjects taken and percentage. Sometimes year of passing and subject taken, these two are skipped, that also is fine. So in name of examination, for example, you will start with your 10th class. Okay, then you will mention name of the board. Like if your board is CBSE, then you will write CBSE. If it is ICSE, then you will mention your ICSE. Name of institution, you will put the name of your school, like ABC public school. You will mention your year of passing. If you passed in 1999, then you will mention here which subjects you had taken. Then you will mention Hindi, English, Math, Science, whatever subject you had taken. What percentage you got? For example, you got 60%, so you will mention there 60%. Then you will mention your class 12th. Then you will mention your graduation. It was
BSc or BA or MA or sorry BBA, whatever you have done, that all you'll mention here. You'll write here. Again, board. In case of class 12, you'll be mentioning the board. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर BSc, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाला हम यूज़ करेंगे. आपने अगर DU से किया है तो आप लिखेंगे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यू विल मेंशन हियर. And if you have done it from any certain college affiliated to University of Delhi, then you will mention the name of that college here and year of passing. Okay, like 2001, 2, 3, whenever you pass, that one you'll mention. And then subjects, like if you did it in physics honors, so you'll mention here physics. Then honors you'll mention, and then percentage, what percentage you earned there, that also you'll be mentioning. Now we'll understand all these things better with the help of a few samples. So sample 1, we have the question like this will be given in your exam. The question says, Bal Vidya Public School Bhilai urgently requires a postgraduate teacher in political science, for which they have placed an advertisement in the Bhilai Express. You are Sanjay or Sanjana Sharma from 21 Vasant Marg, Bhilai. Draft a letter including a resume applying for the advertised post. Whenever you are answering any question in exam, especially I'm talking about the languages, so you have to read your question a number of times, because most of the details you will get in the question itself. Like here we are getting the receiver's address. Who's the receiver here? Bal Vidya Public School, Bhilai. And you also have got here the post for which you have to apply, like PGT in political science. You also get the name of the newspaper, the Bhilai Express, where you came across this advertisement. You also got the name of the person applying, Sanjay or Sanjana. You also got the sender's address here, 21 Basant Marg, Bhilai. Fine. Now we'll see the answer. First of all, you will be writing job application. Please, please, please do not reverse this process. ना करें आप इसको. ऐसा नहीं कि आप पहले रेज्यूमे लिख दें फिर आप जॉब एप्लीकेशन लिखें. नो, फर्स्ट यू विल हैव टू राइट जॉब एप्लीकेशन, देन गो टू द रेज्यूमे पार्ट. सो फर्स्ट हियर यू कैन सी sender's address, then date, then here receiver's address. Whenever you are applying for the post of a teacher or librarian or a physical instructor, तो आप the principal को ही address करेंगे. See, a few general things we are supposed to know already, like generally the questions related to teaching positions come in your exam, and sometimes engineering jobs also, and sometimes marketing job, and a few times related to chartered accountant also. So when it is teaching, so do not forget to include B.Ed in that. If it is about engineering job, then obviously any branch of B.Tech you will be mentioning related to the advertisement. If it is about marketing, then MBA or BBA you will have to mention. If it is CA, then obviously you are going to mention BCom, MCom, something, whatever the required qualification is. तो थोड़ी सी हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होनी चाहिए कि पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है. एक जनरल आइडिया होना चाहिए, डीप इंफॉर्मेशन भले ही ना हो. सो हियर वी रोट द receiver's address. Now subject part, application for the post of a postgraduate teacher. अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज इसी की वैकेंसी निकली थी. अब देखिए यहाँ इस वाले एडवर्टीजमेंट में तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी निकली थी, तो आप बस इतना लिख देंगे चलेगा. बट कभी कभी एडवर्टीजमेंट्स में कई सब्जेक्ट्स की निकली होती, लाइक इंग्लिश, हिस्ट्री और मैथ्स, फिजिक्स, अगर सबकी निकली हुई है तो आपको ये लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. अपना सब्जेक्ट बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट so that it will be exactly clear to the reader that for what post are you applying. Then here we have salutation sir or ma'am. Then body of the letter, here we have in response to your advertisement in the Bhilai Express, dated. You will have to mention the date also. For the post of a political science teacher in your renowned school, I wish to offer my candidature. I am available for the interview on any date of your convenience.
if given a chance, वो जो last part मैंने बताया था, some promising note, so here the person has added here, if given a chance to serve, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction. This is the promising note which I was talking about. After that, thank you, yours faithfully, yours, no apostrophe here, and F will be here small. You can also write yours sincerely as well. Then leave space here for signature, like if I'm Sanjay, then I'll sign here Sanjay, then I'll write my name in brackets. And now see, as in this third paragraph, I have not mentioned the enclosures at all, so I have written here enclosures. Then what I have included, I have attached here my resume, तो मैंने यहाँ mention कर दिया, and in case I have attached my certificate also, so I'll be writing at number 2 certificates या फिर copies of certificates I'll mention here. Now we come to the resume. तो जैसा कि format आपको मैंने already बताया, तो we are writing here name of the person we wrote here, then father's name, and in a few cases mother's name also is included, date of birth is mentioned. When you write the date of birth, then keep in mind that some logical DOB you have to mention, like at least the person should be of 20 years or 20 में तो कॉलेज भी पास नहीं किया होगा, like 23 plus something age होनी चाहिए. Then only the person is applying for the job. Obviously, if you are mentioning experience also, so accordingly such type of year should be mentioned. Then address, same address which you are mentioning in the letter. Then phone number, this way, okay. In board exam, you are not supposed to write your real name anywhere. You are also are not supposed to mention your roll number anywhere except to the first page where you are filling all the details. Even you are not supposed to mention your correct phone number also anywhere. Then email ID, same goes with email ID also. तो आपको email ID अगर लिखनी है तो just write the person's name and @gmail.com or Yahoo Mail or Rediff Mail, whatever you wish. Then marital status, unmarried, and in a few resumes you will find gender also. So you will mention here male or female, whatever the person is, okay, male or female, that also is mentioned. Nationality, Indian. Now comes academic qualification. So previously I was telling you about that tabular form. Educational qualifications can be written this way also without making tables as well. Like first one, it is written BA in political science and MA in political science and B.Ed. See, this person has applied for the post of PGT political science, like postgraduate टीचर इन पॉलिटिकल साइंस. तो पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए एमए होना चाहिए सेम सब्जेक्ट में और बीएड होना चाहिए. सो दीज थिंग्स आर टू बी केप्ट इन माइंड, एंड देन वी हैव टू एड 2 references also. So while mentioning references, you have to make sure that you are writing their address also, and in a few cases you will have to write their mobile numbers as well. So minimum 2 references you have to mention, not 1. 2 references हमें ऐड करने होते हैं अपने रिज्यूमे में. रेफरेंसेस का मतलब होता है वो नोन लोग जो आपके बारे में आपके एम्प्लॉयर को बता सकते हैं दैट व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लॉई और व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर इफ you are shortlisted and the call is made to your references. Now second question we are here with. You are Siddharth Sahai. Recently you have come across an advertisement under required column of the Hindustan Times. तो यहाँ हमें न्यूज़पेपर का नाम मिल गया. For the post of a mechanical engineer in Opus Technologies Limited, Pune. You got here the receiver's address. Write an application for the job giving your complete resume separately. Here the sender's address is not given. Fine. तो वील हैव टू डिवाइस सेंडर्स एड्रेस. तो यहाँ पे हमने अपने मन से एक एड्रेस लिखा है. यू कैन ऑल्सो राइट एग्जाम हॉल 205 संस्कृति अपार्टमेंट राजनगर पुणे, बिकॉज हम पुणे में ही कर रहे हैं जॉब को अप्लाई, तो हम पुणे लिख सकते हैं. बाकी सिटीज़ के भी नेम्स आप लिख सकते हैं. देर इज नो सच इश्यू. वन मोर थिंग इज हियर दैट द राइटिंग ऑफ दिस, लाइक द डेट ऑफ राइटिंग ऑफ दिस जॉब एप्लीकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू the date of advertisement published in the newspaper, because first you saw the ad then only you wrote it. Okay, तो उसके बाद की या same day you can write.
Then here we have receiver's address. So already I have told you, when we write receiver's address, we mention the designation of the person as well. Like here we have mentioned the manager, Opus Technologies Limited, Pune. You should use 2 to 3 lines for writing the sender's address or the receiver's address. एक ही line में नहीं लिखते हैं. Now here we have subject, application for the post of mechanical engineer, and you are supposed to underline this subject as well. Then salutation sir, or you can write ma'am also. In response to your advertisement in the Hindustan Times, यहाँ पे देखिए, the person has told that what is the source of this information, dated 11 March 2022, I hereby submit my application for the post of mechanical engineer in your renowned company. Now see here, year also is mentioned and spelling of the month is written in full. तो वो भी हमें follow करना है. I am a passionate professional and always ready to accept challenges. Now here the person is talking about himself or herself, that what type of employee or what type of person this applicant is. If I am given a chance, I assure you that I'll leave no stone unturned to uplift the reputation of your company further higher. Looking forward to building a career with you. This is the promising note which I was talking about while discussing the format. Yours sincerely, no apostrophe and small s here, Siddharth Sahai. Here the space is left for signature. Okay, signature always is written above the name. नाम के ऊपर होता है signature always in case of anything official or formal. Then as enclosures were not mentioned in the body, so here we have written enclosures, 1 resume, number 2 copies of certificates. Now as we have mentioned resume here, we will be writing resume. We are not mentioning certificates because certificates हम लिखते नहीं हैं, we only attach photocopies of the certificates. So here we are with the resume. आपको यहाँ पे ऊपर heading भी लिखनी होती है resume. Then you begin with your name and you should try to follow this chronology itself. ये जो chronology है यही follow करनी चाहिए. Like first of all you are writing the name Siddharth Sahai, then father's name. If you are writing mother's name, then before father's name you can add mother's name also. Date of birth. Again keep in mind that the person's age should be like in such a way that the person is eligible for the job, obviously. Then gender, male or female. Then address, same address which you have mentioned in the job application. And then phone number. Do not ever write your correct phone number in the exam, in the answer sheets. Then you will mention the email ID here. Now we come to the educational qualifications. So here we have taken the tabular form. So examination, institution, board or university, percentage. Now see यहाँ पे जो subjects वाला column है वो skipped है. Okay, तो आप subjects वाला column add भी कर सकते हैं. So beginning with the lowest one, like 10th class से शुरू करके इसे हम इसी chronology में इसी order में लिखते हैं. First of all 10th class is mentioned, then 12th class, then BTech, because the person is applying for the post of a mechanical engineer. So here we are, institution St. Mary's Academy, Delhi, board was ICSE, percentage was 95, and in 12th, same institute, board same, and percentage 93, BTech BITS Pilani. And what is the university here or the board here? BITS yani BITS, and percentage is 85%. Then projects are mentioned here, that at what project the person has worked during the internship या फिर कॉलेज के वक्त में ही अगर कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह किया है तो उसका आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने मैनेज किए हैं. लाइक हियर द पर्सन हैज़ मेंशन 2 प्रोजेक्ट्स, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सिस्टम एट पंजाब ट्रैक्टर्स लिमिटेड मोहाली, design and fabrication of engine management system OTC Chandigarh, and the person has mentioned here the skill set also. When it comes to skill set, तो यहाँ पे ये आपके academic से अलग भी हो सकता है. Like there are many people that means they join some coaching classes or tuitions or somewhere they join the institutes to gain some extra knowledge that is not in their curriculum. उसके बावजूद भी वो कुछ सीखते हैं. Like कुछ लोग computer courses करते हैं, तो that can be written in skill set, like programming language. Though this person has applied for mechanical engineer's post, but this person is well versed in programming languages like C, Java, HTML and VB script also.
and the person also has done some degree or diploma course in front end software developer 2000. So that will be mentioned in skill set. And you can also add the languages known also, like English, Hindi, Malayalam, Telugu, whatever languages you are proficient in, you can add before, after skill set itself. And hobbies thing can also be added. But whatever you are writing in hobbies, you have to be sure that you are able to answer questions related to that. Now comes the references. So minimum two references you have to mention, like this person has added Professor R.V. Singh, Dean, Kalkaji University, and the contact number is added here. And second reference here is Mrs. Diksha Rai, HOD English, GPS, Barabanki. Then declaration. In a few resumes you must have seen this declaration part also, और आपने कहीं कहीं ये नहीं भी देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो directly you will come to place date and signature and name. But if you are putting this thing, then that will be better for your resume. So declaration is, I hereby declare that the above given information is correct and true to my knowledge. Then you will mention the place here. Like if you are writing this from Pune, you will mention Pune here. And if you are writing it on 11th of March, then again you will write the date in this format itself. Do not forget to write the year of writing this also. Sabhi likhna hota hai, month, date and year. Then you will put your signature here, like Siddharth, I think the name was Siddharth, that you will put your signature, then you will write your name here afterwards. So that was all about resume and job applications, and I'm sure you all understood it very well. Thank you so much for watching.